Hello students, welcome to the Tantray physics classes. We continue our lecture series on rotational dynamics, and today's lecture is on angular momentum, translational angular momentum. There are two kinds of angular momentum, translational angular momentum and rotational angular momentum. First of all, we will discuss translational angular momentum. So, number one, angular momentum. Angular momentum. Of course, it is translational angular moment of an object. First of all, you must understand angular momentum, these rotational physical quantities are always defined about some fixed point. So angular momentum, translational angular momentum, or even rotational angular momentum, they are defined about a point. Translational angular momentum is defined about a point, and rotational angular momentum is generally defined about an axis. So if somebody asks you a question, what is angular momentum? It has no meaning unless he gives you a point. I mean, he must ask you a question, what is the angular momentum of a body about a particular point? That point must be fixed. Okay, so angular momentum, how it is defined? The definition of angular momentum about a point, suppose it's a point here, point O, it's a fixed point. It may be a center of mass of any particular body. It may be the center of the sun. It may be the center of the earth. It may be any space point. And here is an object of mass m. First of all, how we define its position with respect to this fixed point? How we define its position? Its position is defined just by this radius vector r. If this object moves, this radius vector will also change. Obviously, it will change if the object moves over here, and the radius vector will be like this. Suppose this object here, it has a velocity v in this direction, and therefore its momentum p is equal to mv, and that momentum has also the same direction as the velocity. If by the motion of this particle, जो इस particle का motion है, अगर उस वजह से इस r का direction change हुआ, इसकी motion से move forward or in any direction, अगर उसकी वजह से ये जो r है radius vector, अगर इस radius vector का direction change हुआ, मतलब particle यहाँ पहुंचा तो radius vector यूं चला गया up to that, तो radius vector longer भी हुआ और उसका direction भी change हुआ. अगर इस particle की motion की वजह से अगर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ अबाउट दिस पॉइंट, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट हैज एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट. दैट इज ऑल. By its motion, if the radius vector direction changes, that simply means the particle has angular momentum. Suppose the particle moves in this direction. In this direction it moves. Let me suppose. If it moves in this direction, the radius vector becomes longer and longer and longer. But it will not turn about this point. In that case, the angular momentum of this object about this point is 0. So this radius vector direction should change. Okay. Now, this r has this direction. This momentum has this direction, mv. इसको p ही लिखो. Momentum का direction ये है. Momentum is mv. The angle between p and r, let me suppose, is theta. Right? Now, the angular momentum is defined L vector, angular momentum is defined as R cross P. ये है definition angular momentum. So magnitude of angular momentum, as you know how to deal with the cross product, is RP sin theta. इसका मतलब अगर ये थीटा 0 है, मतलब पार्टिकल का मोमेंटम इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन है. थीटा 0 होने की वजह से अगर particular motion यूं है, तो if theta is 0, उसका मतलब angular momentum is also 0, because sin theta 0 इसको सारा 0 बनाएगा. अगर theta is 180, then again angular momentum is 0, because sin of 180 भी 0 है. मतलब particle यूं नहीं, लेकिन इसी के ओर आ रहा है, यहाँ इस motion इसमें against r जा रहा है अंदर की ओर towards this point.
इन दोनों चीजों का मतलब यह है, इफ द पार्टिकल मोमेंटम, अगर इसका जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम, अगर इसका मोमेंटम इस पॉइंट के थ्रू पास होता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, पार्टिकल यहां पर है ऐसे, ये आर है, अगर मोमेंटम यूं है तो जीरो हो गया एंगुलर मोमेंटम, अगर मोमेंटम ऐसे है तब भी एंगुलर मोमेंटम जीरो है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम का एक्सिस है, अगर ये पॉइंट के थ्रू पास करता है, मोमेंटम का जो एक्सिस है, मोमेंटम का जो लाइन है, वेक्टर लाइन, इफ दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। सो इन दो चीजों का मतलब यह है, इफ द मोमेंटम passes through a point, passes through a point, then angular momentum about that point is zero. ये इन दो चीजों का मतलब है। और अगर थीटा 90 है, इफ थीटा इज 90, मतलब अगर ये जो मोमेंटम है इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में मोमेंटम है, और आर ये है, ये आर है, रेडियस वेक्टर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द मास, तो इस सूरत में ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। उस सूरत में एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है आर एंड पी, सिंपली इन दो का मल्टीप्लाई है, आर और पी को मल्टीप्लाई करने से एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड पी। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू आर एंड पी, मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द आर एंड पी गिवन बाय द राइट हैंड रूल। मतलब अगर ये मोमेंटम है, ये आर है, आर को मोमेंटम में वाइंड करो, curl your fingers from R to P and watch where the thumb goes, that goes inside. So angular moment ka direction perpendicular to the plane of the board, because R and P lie in the board, and angular moment is inwards direction. Okay, this is one point. Second point is again, angular momentum is R cross P. Magnitude of angular momentum is RP sin theta. अब हम इसको लेट अस गिव अ डिफरेंट मीनिंग टू दिस। अगर मैं इस P के दो पीसेस करूंगा, मतलब इसको कंपोनेंट बनाऊंगा, एक कंपोनेंट इस ओर आएगा, दैट्स P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस ओर आएगा, दैट्स P sin थीटा। ये P sin थीटा का कंपोनेंट इस R को परपेंडिकुलर है, और ये P cos थीटा का कंपोनेंट R के थ्रू ही पास होता है, इट हैज द सेम डायरेक्शन एज R। इसका मतलब P cos थीटा विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एंगुलर मोमेंटम, it is P sin theta which will cause the angular momentum of this object about this point P. So this is responsible. So what component of momentum P is responsible for creating angular momentum? The component of momentum which is perpendicular to R, that will create angular momentum. So we should be concerned about this P sin theta. मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो आर को परपेंडिकुलर है वही क्रिएट करेगा एंगुलर मोमेंटम। ये देखो यहां पर P sin थीटा, सो आर, ये P sin थीटा इज P परपेंडिकुलर, आई मीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ P, perpendicular component of P which is perpendicular to R, that contributes to angular momentum. So that means you have to multiply only two things, that is full radius vector, position vector, and perpendicular component of the momentum. You just multiply and get the answer of for the angular momentum. Or conversely, अगर हम एक और चीज करेंगे, ये मोमेंटम जो है
ये पूरा मोमेंटम का एक्सिस समझो, ये एक्सिस है मोमेंटम का, पूरा मोमेंटम ये है P, और मैंने R इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला इस पर मोमेंटम एक्सिस पर, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये R है, R वेक्टर ये है, तो R के दो पीसेस करेंगे, ये R का वो कंपोनेंट जो P के पैरेलल में है, और ये R का वो कंपोनेंट है दैट इज R sin थीटा जो पूरे P एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं P पूरा लूंगा और इस बाकी है R sin थीटा, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, सो दैट इज P तो पूरा है, ये पूरा P लिखना पड़ेगा, R का कौन सा पीस लिखूंगा, ये वाला पीस दैट इज R sin थीटा, दैट इज R परपेंडिकुलर। तो ये दोनों या पूरा R लेकर P परपेंडिकुलर पीस के साथ मल्टीप्लाई करो, या P को पूरा लेकर के R परपेंडिकुलर पीस के साथ मल्टीप्लाई करो, और उससे भी आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ये दोनों फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमें वो मोमेंटम और वो रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई करने हैं आपस में टू गेट द एंगुलर मोमेंटम विच आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो पैरेलल कंपोनेंट्स है P इन द डायरेक्शन ऑफ R विल नॉट कंट्रीब्यूट, या R radius vector in the direction of P will not contribute. That will contribute which are perpendicular each other. R and P, components of R and P which are perpendicular each other, multiply them and get the angular moment. That is now the technique. ये दूसरी चीज है जहां जो हम यूज करेंगे how to find the angular moment. Number third. Number third, फिर से देखो मैं आपको ये बनाता हूं, इट इज पॉइंट O, इट इज पार्टिकल हियर, इट इज रेडियस वेक्टर R, इट इज मोमेंटम P, इट इज द एंगल बिटवीन द टू, एंगुलर मोमेंटम L is equal to R cross P. I can put it like this in the vector form. L is equal to, इसके कंपोनेंट्स लिखिए, that is Ix plus Jy plus Kz, क्रॉस करके किसके साथ, Ipx plus Jpy plus Kpz, इन दो को क्रॉस कर, इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखा और इसको भी। अब जब आप दोनों को क्रॉस करोगे, ये I क्रॉस I 0 और सब कुछ करके 2-4 स्टेप में, तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा ऐसे, I YPZ माइनस इसका उल्टा YPZ, यहां माइनस करके ZPY लिखिए, प्लस JZPX माइनस XPZ। ये इसको जब क्रॉस करेंगे बाज़ाब्ता 2-4 स्टेप पे, तब ये मिल जाएगा, प्लस के आगे जो ब्रैकेट में होगा उसमें XY होगा, Z नहीं होगा। I जो है इसके आगे Y और PZ होगा, X नहीं होगा। J के आगे इसमें Y नहीं होगा, इसमें X नहीं होगा, और K के आगे Z नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द, सपोज A क्रॉस B अगर है तो A क्रॉस B का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू A एंड B। अगर A और B XY प्लेन में है तो इनका A क्रॉस B Z डायरेक्शन में होगा। तो दैट इज व्हाई वी डोंट गेट हियर X, वी डोंट गेट हियर Y, वी डोंट गेट हियर Z इन दिस, सो इट इज X PY माइनस YPX। ये है क्रॉस प्रोडक्ट इस एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म I, J and components. These are the components of the angular momentum. This is the X component, this is Y component, and this is Z component of the angular moment.
फोर्थ पॉइंट। हाँ, इसको और एक चीज करना है, इसको आप डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं ऐसे करके, L इज इक्वल टू आई जे के एक्स वाई जे पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इसको याद रखने के लिए आई के साथ जो दो लाइन से क्रॉस करना है, और वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे इट इज जेड पी एक्स। अब अगर जे है तो ये लाइन खत्म करके इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जेड को पी एक्स के साथ और एक्स को पी जेड के साथ, प्लस के टाइम्स के, ये वाला के, इसके साथ ये लाइन खत्म, ये डिटरमिनेंट रहेगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये शॉर्ट करने का तरीका है, याद करने का तरीका, कोई किसी तरीके से भी याद रख लो, इट इज द एंगुलर मोमेंटम इन द वेक्टर फॉर्म। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड वेक्टर दिस एंगुलर मोमेंटम in different cases. How to find angular momentum in different cases? How to find angular momentum in different cases? How to find angular momentum in different cases? Now let me take the example number one. It's a particle here. It is mass is m and velocity is v. Velocity is v, and it moves. Obviously, it is the velocity axis. And here's a point. Oh, I want to find the angular momentum of this object about this O. That's the question. What is the angular momentum? Momentum is mv. But what is the angular momentum of this object about this O? So what we do? What is the technique? This is the momentum axis. What is momentum axis or momentum line of action? It is the line passing through the momentum. अगर ये मोमेंटम है तो इसी के थ्रू एक लाइन डाल दो, इसको कहते हैं मोमेंटम एक्सिस, और इसको आप कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मोमेंट। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के आपको इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है ऐसे, बस। ये टेल ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये हेड है, ठीक, और इसको मेजर करके सपोज इट इज एल। तो अब एंगुलर मोमेंटम जो है, दैट इज मोमेंटम, दिस मोमेंटम टोटल, दैट इज एम वी राइट इनटू दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल। आंसर, you have to multiply that momentum and that r which are perpendicular. ये खत्म हो गया, बस। डायरेक्शन निकालने के लिए इस L को आगे बढ़कर, ये डायरेक्शन L का या R का, मोमेंटम का डायरेक्शन आगे, ये तो R, ये R है, ये P है, R क्रॉस P, R से लेकर के ये R है, ये P है, R से लेकर के ऐसे कर दो, एक कर्व डाल दो, तो curl your fingers in the direction of this curve, in this direction, and watch why the thumb goes inside the board. The angular momentum is inwards, because you are crossing R into P inwards, right? Second, मैं यहां आर्बिट्री डिस्क एक रखता हूं, ये A है, ये समझो सेंटर B है, ये समझो C है, और यहां इस पॉइंट को यहां पर एक मास को भेजता हूं ऐसे। दिस इज द ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी v एंड मास m। तो व्हाट इज द, इट इज द पार्टिकल, या ऑब्जेक्ट मान लो या पार्टिकल मान लो। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट c? एंगुलर मोमेंटम अबाउट c, यस, ये जो मोमेंटम है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट c, ये पॉइंट c के थ्रू ही पास करता है, इसलिए जीरो। If the momentum passes through a point, then the angular momentum of that object about that point is zero, because this momentum passes through C. So angular momentum about C is zero. What is angular momentum about A? About B? That is mv. What is the shortest distance from B on the momentum axis? If the r is the radius of this disk, mvr.
डायरेक्शन, डायरेक्शन ये टेल है, ये हेड है, हेड को आगे लीजिए, मोमेंटम को आगे लीजिए, इसको इस पे क्रॉस किए इनवर्ड्स. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए? दैट इज सेम mv इनटू यहां से यहां डिस्टेंस जो है दैट इज 2r. आंसर. These are the practical ways of how to find the angular momentum, of the objects. Third example. Now see here, suppose it's a rod suspended from the fixed stand, rod hanging, right? And a bullet here of mass m and velocity v is coming and hits the rod here at this point. Okay? What is the angular momentum of this bullet? Angular momentum of this bullet about O. So it is L, angular momentum, small l, angular momentum that is mv into what is the shortest distance from fixed point on the momentum axis? Draw a perpendicular from here to here. वो तो खुद L है, length of the rod into L. So when the bullet hits the rod at this, the angular momentum of this bullet about the fixed point is mvl. Direction, this is the direction of the momentum forward, and this is the direction of r cross p outwards. If you curl your fingers in the anti-clockwise, it's outwards like this because r cross p. Fourth, it's an object here, is the origin. It has velocity 3 meters per second. Its mass is 5 kg and it makes angle 30 degrees with the x-axis, and this is suppose 4 meters. What's the angular momentum? What is the momentum of this object P? That is mass into velocity, that's 12. Sorry, mass into velocity, that's 5 into 3, that's 15. इस मोमेंटम के दो टुकड़े कर दो. कहीं कहीं ये होता है ये कॉन्सेप्ट, कहीं ये भी आप कर सकते हो. इस मोमेंटम के दो पीस कर दीजिए. एक पीस है 15 cos 30. ये पीस ऊपर वाला पीस क्या है? 15 sin 30, क्योंकि जिसके साथ एंगल डिफाइंड है वो cos कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल डिफाइंड नहीं है वो sin कंपोनेंट हो जाता है. तो 15 sin 30 जो मोमेंटम कंपोनेंट है that passes through the origin, so it will not contribute any angular momentum. It is this which will contribute angular momentum. So answer is 15 cos 30 into this 4 meters. Multiply that component of the momentum and the shortest distance. Multiply that component of the momentum and that r which are perpendicular to each other. So this will give you the answer. L is equal to 60 cos 30 root 3 by 2. That is 30 root 3. Answer. Right? These are few examples which I have discussed with you of angular momentum, and this will continue in a few more lectures. And don't forget to download my app, Nazir Physics Classes, from where you can download many more questions, and also subscribe to my channel, Nazir Physics Classes. Okay, thank you.